Hello students, let's start our new topic, that is structure of human heart. We are discussing about human blood circulatory system. हमने blood circulatory system के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है. हमने देखा था कि human blood circulatory system is divided into three parts like blood, blood vessels and then heart. Blood and blood vessels we already discussed in our previous video. वो हम कर चुके हैं, तो अब हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे. We are moving forward with our new topic, that is human heart or heart. Let's take a look on the structure and about the heart, how human heart is formed and where it is present. सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की पोजीशन के बारे में. Where is the heart located? कहाँ होता है human heart? You will say me when somebody will ask you, you will tell that heart is present in our chest. Heart कहाँ present होता है? हमारी chest के अंदर. That's right, that heart is present in our chest and it is located near the लेफ्ट लंग. हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो वहां पे हमने देखा था लेफ्ट लंग हैज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच. उसे बोलते हैं कार्डियक नॉच, जहां पे हार्ट लोकेटेड होता है. सो वी कैन से दैट आवर हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट इन विद द लेफ्ट लंग और which means very near to the left lung. So location is in the chest and is with left lung, near the left lung in the thoracic cavity. और उस cavity को हमने क्या कहा था? thoracic cavity. thoracic cavity के अंदर present होता है हमारा heart. thoracic cavity अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है तो एक बार फिर से बता दूं. thoracic cavity is just a case like structure. एक case जैसी structure है जो किससे बनी है? It's formed from the ribs, from the sideways, in front sternum, behind the vertebral column and below the diaphragm. All these things combined form a case-like structure and this is known as thoracic cavity. So our heart is also located in the thoracic cavity near the left lung. This is the location of the heart. And if we talk about the size of the heart, जो हार्ट का साइज होता है इट्स जस्ट अबाउट 12 सेंटीमीटर. मीन्स एक एडल्ट अगर ह्यूमन हार्ट का हम साइज देखते हैं सो द साइज ऑफ द हार्ट इज अराउंड 12 सेंटीमीटर. इट्स वेरी स्मॉल साइज. की साइज इतना कम है, अगर हम इसे कंपेयर करें कि कितना होगा, इट्स साइज इज अबाउट अवर क्लोज्ड फिस्ट. हमारी जो क्लोज्ड फिस्ट होती है उसका जितना साइज होगा उतना ही साइज हमारे ह्यूमन हार्ट का है. इतना छोटे साइज का होते हुए भी ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये आप जानते हैं, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी विच कंटिन्यूसली पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये कंटिन्यूसली पंपिंग का काम करता रहता है विदाउट टेकिंग रेस्ट. यू नो दैट आवर हार्ट्स बीट्स 72 times per minute and without taking rest it can continuously beat. And you know that it can be beat when it can be come out from the body. अगर हम इसे बॉडी से बाहर भी निकाल लेंगे ना तो भी इसकी बीटिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली मतलब वो कंटिन्यू रह सकती है. So this is some amazing facts about the human heart. Okay, the size is about 12 centimeter. एंड द शेप, अगर हम शेप की बात करते हैं, जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट उसकी शेप होती है वो होती है ऑलमोस्ट इट्स नियरली कॉनिकल और पिरामिडल शेप. जो शेप है वो कॉनिकल या पिरामिडल शेप होती है, जिसमें ऊपर का पार्ट जो होता है वो होता है ब्रॉड और द लोअर पार्ट्स बिकम द नैरो. द अपर पार्ट इज द ब्रॉडर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज अ नैरो पार्ट. सो अवर अपर पार्ट इज नॉन एज बेस. Our upper part of the heart, that is the broader part, is known as base and that lower narrow part is known as apex. इसे हम बोलते हैं apex. So this is the about the shape. conical और pyramidal shape हो सकती है, इस तरीके की structure है. अब बात कर रहे हैं इसकी covering की. Heart is also covered by some membranes, some layers. Heart को भी protection की जरूरत होती है क्योंकि बहुत important organ है. वैसे thoracic cavity में present है जहां पे इसे complete protection मिल रही है, but it also requires some protection and these protections are given by some special structure, the layer of the heart that is known as pericardium. Heart जिस covered से covered रहता है, that cover of the heart that is known as pericardium. So pericardium is the covering of the heart by which heart gets separate from the external environment and it's become safe. Pericardium has some layers and in between these layers एक fluid fill रहता है. That fluid is known as pericardial fluid और वो fluid heart को protection देता है by some mechanical shock. Shock से protection का काम करता है वो fluid.
So this is about the structure, outside structure. हमने बाहर का देख लिया कि what is the location, shape, size and the outer membranes of the heart. Now let's take a look inside structure, on the inside structure. Inside the heart, inside our heart is divided into the 4 chambers. अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं, internally it is divided into 4 chambers. ये 4 chamber में divided एक structure है. The upper 2 chambers which are smaller in size, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में ऊपर की जो chambers हैं वो 4 छोटे compartments में divided है and the lower 2 chambers are bigger in size as compared to our chambers. Here one thing you need to know that you should label the sides of the heart also. तो आपको side पता होना बहुत जरूरी है. This side of the heart is known as left side. This is our left side. जब हम ऐसे खड़े होकर अपने हार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज द वे, बट व्हेन वी स्टार्टिंग राइटिंग और ड्राइंग इट, देन आवर राइट हैंड इज दैट साइड. हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तब हमारा राइट साइड इस साइड होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे राइट साइड लिखते हैं, बट इट्स रॉन्ग. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा. यहाँ पे ये वाला जो साइड है, ये साइड होगा लेफ्ट साइड, और ये वाला जो साइड होगा हार्ट का, वो होगा राइट साइड. सो दिस इज द अपर शॉर्ट कंपार्टमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम. जो ऊपर वाला छोटा कंपार्टमेंट है हाथ का, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, एंड दैट लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड इज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो हियर द सेम थिंग इज आल्सो, बट द साइड इज चेंज. दिस अपर lower compartment, this is the right atrium, and this lower part is our left ventricle. So we have 4 chambers: left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. So we can say that heart has 4 chambers. Chambers which are present in the heart are 4 chambers. Upper 2 chambers are known as atrium. ऊपर के जो चैम्बर्स है उन्हें हम बोलेंगे एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. नीचे के जो चैम्बर्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स. एंड दीस वेंट्रिकल्स, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, एट्रियम का साइज छोटा होता है, वेंट्रिकल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है. और अगर हम बात करें इनकी वॉल्स की, थिकनेस ऑफ देयर वॉल्स, द एट्रियम हैज वेरी थिन वॉल. एट्रियम की जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, बट द वेंट्रिकल्स हैव थिकेस्ट वॉल. वी कैन सी हियर दैट वेंट्रिकल्स हैव thick wall, and out of these the left ventricles have the thickest wall. Out of all these 4 chambers, left ventricles have the thickest wall. सबसे ज्यादा thickest wall जो होगी वो होगी left ventricles की. Okay, this is about atrium and ventricle. Why such kind of compartmentation is formed inside the heart? क्यों इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं हमारे हार्ट के अंदर? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. Reason is that we are human being and we do lots of activity. हम बहुत काम करते हैं, आप भी बहुत काम करते हैं, and for all these works we need energy. ये एनर्जी हमें मिलती है हमारे फूड के ऑक्सीडेशन से, और वो ऑक्सीडेशन होता है विद ऑक्सीजन. ये सबको पता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. So in our body, the oxygenated blood, which is the oxygen combined blood, oxygenated blood is need to be separated by the deoxygenated blood. ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे. इसी सेपरेशन को करने के लिए हमारे हार्ट में ये 4 चैम्बर्स बने हुए हैं. हमेशा हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग कंपार्टमेंट्स में फिल्ड होता है. Our left sides always receives oxygenated blood, and our right side always receives deoxygenated blood. So we will take a look on these complete circulation of the heart also. First of all, try to understand the structure. We have written here, heart is divided into 4 chambers. We have 4 chambers. Upper 2 chambers are the atrium, lower 2 chambers are the ventricles. These atriums are related with their ventricles. क्योंकि एट्रियम्स में ब्लड आएगा और वहां से वो वेंट्रिकल्स को भेजा जाएगा, तो वो कैसे सेंड होगा? देयर शुड बी सम वॉल्स आल्सो. यहाँ पे कुछ वॉल होने चाहिए ताकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई किया जा सके. यहाँ एक बात याद रखिएगा, बोथ ऑफ दीज 2 एट्रियम्स एंड बोथ ऑफ दीज 2 वेंट्रिकल्स, दे आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स, वॉल्स. यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो दोनों एट्रियम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों वेंट्रिकल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. दे जस्ट रिलेटेड विद, लेट्स सी हाउ दे आर रिलेटेड. लेफ्ट एट्रियम्स आर कनेक्टेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट एट्रियम्स आर रिलेटेड विद और कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल्स. सिर्फ एट्रियम अपने वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट के साथ है और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के साथ है.
आपस में atriums and ventricles they are not connected. So for making the connection of the left atrium with the left ventricle, here walls are present, and the wall which is present between these left atrium and left ventricles, the wall is known as bicuspid wall. जो wall left atrium और left ventricle को आपस में join करता है वो wall कहलाता है bicuspid wall. Bicuspid wall. Why the name is given as bicuspid? What does it mean? Let's see. Cuspid means the flap-like structure. यहाँ पे जो wall होते हैं, इनकी membranes के बीच में wall है, इनकी जो walls बनी atrium और ventricle के बीच में membranes के बीच में wall है, उन walls में इस तरीके की flap-like structures होती हैं. They have such kind of flap-like structure. If here two flaps are present, अगर इस तरीके से two flaps present है, तो उसे हम बोलते हैं bicuspid wall. So the wall which is present between the left atrium and left ventricle, these walls are known as bicuspid walls. And similar in the same manner, right atrium is also connected with the right ventricle, and the wall which is present between right atrium and right ventricle, this wall is known as tricuspid wall. Tricuspid wall. And tricuspid again, cuspid means the flaps. The structure of the tricuspid walls is somewhat like this कि इसमें जो होता है इस तरीके से partition बना होता है. Three flaps are present, 1, 2 and 3. So it's known as tricuspid wall. इस तरीके की structure होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं tricuspid. The wall which is present between right atrium and right ventricle is tricuspid, and the wall which is present between left atrium and left ventricle is bicuspid wall. These atrium and ventricles receives bloods, and then they transport the blood to the body. Here we have done some blood vessels or some important part of the blood also. It is the superior vena cava which gives blood from the upper part of the body, and its inferior vena cava. Both of these two vena cavas they carry deoxygenated blood from all over the body. ये पूरी body से deoxygenated blood को carry करने का काम करती हैं. And here the structure that is done is the pulmonary artery. This is the pulmonary artery which gives blood to, which carry deoxygenated blood and gives to the lungs. तो ये lungs को blood transport करने का काम करेंगे. Here these are the pulmonary veins. 4 pulmonary veins are present, and these pulmonary veins comes from the lungs. ये lungs से आती हैं and they pour blood to this left side. All this structure of the functioning of blood circulation we will discuss in our next video. Here we have just discussed about the structure of the heart. So I hope you will able to understand the structure, that is the 4 chamber, and these 4 chambers are atrium, right atrium, left atrium, right ventricle, left atrium, and they are connected with bicuspid wall is present is this side, and tricuspid walls are present at that side, and the thickest wall is of left ventricle. So this is about the structure, position and shape and size of the heart. In the next video, we will discuss about the blood circulation or the working of the human heart. How does our heart works? So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.